Well, welcome to the live discussion on third ODI, which is going to be played between India and South Africa. We have seen two matches back to back where India won one game and South Africa won. So this series is basically one all. And now this is a series decider, and I hope this is going to be a great match because we all are here for crazy cricket, and this is what we are going to expect from this particular clash. I'm there to welcome Aditya and Pratya in this conversation. Thank you so much, gentlemen, for joining me. Since Aditya, we all know कि South Africa के लिए it was very important to win this series by 3-0 क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो साउथ अफ्रीका के चांसेस बढ़ जाएंगे टू गो फॉर द ओडीआई क्वालिफायर और लास्ट मैच जो रांची में हुआ उसे इंडिया ने जीत लिया तो ये मैच अब हम सभी के कार्ड्स पे है अभी दिल्ली में ये मैच खेला जाएगा बट साउथ अफ्रीका के लिए आफ्टर ऑल ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंस साउथ अफ्रीका को हमने कभी एज सच क्वालिफायर्स में देखा नहीं एटलीस्ट मैंने अपनी जर्नी में तो नहीं देखा बट ये देखना कितना अजीब होगा अभी हालांकि कंफर्म नहीं है लेकिन अगर ऐसे साउथ अफ्रीका मैच हारती गई तो ये काफी डिफिकल्ट होगा आई गेस साउथ अफ्रीका के लिए यस देखिए थोड़ा उनका पहले का परफॉर्मेंस भी इज टू ब्लेम फॉर दैट एंड देन अगेन दे कैंसल्ड द what you can say the Australia series which was so important for them for the T20 league which they are launching. So in a way they are themselves to blame for that situation, but for now I think their aim will be to at least win this series and stay in a better position ahead of the T20 World Cup at least. So yeah, अजीब तो होगा, अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस लग रहे हैं क्योंकि वो अभी 11th पोजीशन पे है और ऊपर आना मतलब इवन इफ दे वुड हैव वन दिस सीरीज 3-0 एंड ऑल द रिमेनिंग मैचेस दे वुड हैव स्टिल गॉन टू 125 ऑड पॉइंट्स समथिंग एंड जो कि अभी ऑलरेडी इंग्लैंड के है और टॉप 7 टीम्स के है. सो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है, बट यस देखना तो अजीब होगा कि साउथ अफ्रीका क्वालिफायर्स खेले. डेफिनेटली और टॉस हो चुका है यहाँ पे इंडिया ऑप टू बोल और साउथ अफ्रीका के एंड से वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आइदर बबूमा इज गोना कम बैक एज अ कैप्टन और मे बी केशव महाराज विल कंटिन्यू बट अ डिफरेंट सिनेरियो इज हियर अगेन डेविड मिलर इज द कैप्टन ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच और उन्होंने आते ही सबसे पहले अपडेट दी है महाराज इज नॉट फीलिंग गुड सो ही फेल सिक सो इज शामसी और बबूमा पहले से ही अवेलेबल नहीं थे इस मुकाबले के लिए सो डेविड मिलर वर्सेस शिखर धवन इट इज गोइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर मैच लेट्स टेक अ लुक एट द हेड टू हेड ऑफ दिस ODI between India and South Africa. And as per the numbers, South Africa has an upper hand since they have played 89 matches together so far in total, in which India have won 36 and South Africa have won 50 and 3 matches का कोई रिजल्ट नहीं रहा. वैसे ऐसे नंबर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जब किसी टीम के इंडिया के अगेंस्ट इतने अच्छे नंबर्स हो. हालांकि इंडिया की बात नहीं करेंगे इटसेल्फ जब इंडिया में भी खेला है तो बहुत ही टाइट सिचुएशन रही है दोनों ही टीम्स के बीच में बट 50 जीते हैं साउथ अफ्रीका ने मैचेस. आई थिंक दैट इज अ बिग नंबर प्रत्यय over India by any side itself. Yes, definitely. I mean, historically, it's a side that has actually dominated India. But then we have to also factor in the fact that South Africa have been great travelers. They have been a side that is known for being good travelers. In the last decade or so, that those things have changed. They're a formidable side at home. Then they used to win a lot of games while traveling abroad as well, and no matter which format. So I think because we are talking about the entire history between these two sides in the format, of course you are seeing that yes, South Africa have the upper hand. But if you talk about the recent performances, if you talk about what kind of team they have now, of course there's no dearth of talent, but then a lot of issues of including the off the field issues as well, whatever goes on in their cricketing board, all of those things have taken a toll. So at the moment, South Africa do not look that daunting a side that they once used to look. But still, it's still a very good team. Even in the previous World Cup, I think the last year or so, the format, I mean, the ODIs, yes, of course, in that format, you feel that 11th position and trying to, evade a qualifier playing spot, which they have never been in the past. It's something that they do not, it's not an ideal situation to be in. But if you look at the other formats that they have played, India traveled to South Africa. They ended up winning the Test series. South Africa defeated them. They even won the ODI series there. So I think it is a side that you can never take lightly. And specifically in the T20I format, I think, yes, ODI has not been the strongest suit of South Africa. You can say that because of different reasons, because of injuries, because of their own inconsistent performances. But if you actually look at the other formats, they have actually been performing pretty well in the recent past. So even with a watered down side right now, they just kind of missing a couple of their players, the first choice ones. But still, it's not a side that you would want to take lightly at any cost.
डेफिनेटली। और जब आपने ट्रैवलिंग की बात की तो मुझे वो हिस्ट्री याद आ गई जहाँ साउथ अफ्रीका वाज नॉट नोन टू ट्रैवल अ लॉट। अगर हम एकदम हिस्ट्री की बात करें, जब मैनकाइंड शुरू हुआ था उसके बाद से, बट स्टिल जब उन्होंने स्टार्ट किया तो क्रिकेट में हमने देखा इट टर्न आउट वेल फॉर देम। वेल, विद दैट लेट्स टॉक अबाउट द मैच। थर्ड ओडीआई इट इज, एंड पिच रिपोर्ट की बात करेंगे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच हो रहा है और हिस्टोरिकली ये स्टेडियम एक फ्लैट ट्रैक माना जा रहा है, बट सो फार पिच ये कहती आ रही है द पिच एट अरुण जेटली स्टेडियम प्रोवाइड्स अ बैलेंस बिटवीन द बैट एंड द बॉल। बोथ पेसर्स एंड स्पिनर्स परफॉर्म इक्वली वेल ऑन द ग्राउंड। और ये स्टेडियम होम ग्राउंड है शिखर धवन का, और इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने भी काफी मुकाबले यहाँ पर खेले, एंड आई एम श्योर बहुत सारे प्लेयर्स वेल वर्स्ड होंगे व्हेन इट कम्स टू दिल्ली का ट्रैक। आदित्य, आई आस्क यू दिस कि सिंस हमें पता है कि हिस्टोरिकली जो दिल्ली स्टेडियम है इट इज नोन टू बी अ फ्लैट, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। बहुत बारिश भी हुई है जिसके चलते ये मैच का टॉस भी डिले हुआ, और बारिश पिछली रात बीती रात वहां पर काफी हुई थी। उसके बाद सुपर सॉबर्स का इस्तेमाल करके वहां पे ड्रेनेज की कोशिश की गई। बट एक और अपडेट स्टेडियम के बारे में आ रही थी कि सिंस ये इतना पुराना स्टेडियम है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो खराब हो चुका है। सो दे वांट कि अगर इसको प्रॉपरली, चूंकि दिल्ली एक बड़ा स्टेडियम माना जाता है, तो वहां पर जो ड्रेनेज की फैसिलिटी है वो काफी, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। सो डू यू थिंक बीसीसीआई शुड टेक आफ्टर दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन इसको देख रेख कर रही है? बिकॉज दिल्ली में यूजुअली ऐसा रहता है कि वहां पे बारिश काफी हो जाती है इस मौसम में, ऐसे में मैचेस खिलाना मुश्किल होगा वहां। देखिए सिर्फ दिल्ली नहीं, इंडिया में कई स्टेडियम्स ऐसे हैं जिधर का ड्रेनेज लेके क्वेश्चन उठाया गया है। जैसे अर्लियर आई थिंक साउथ अफ्रीका के T20 सीरीज के टाइम भी ऐसा ही हुआ कि मैच के दिन बारिश नहीं हुए लेकिन फिर भी पैचेस थे। तो यस, गिवन द अमाउंट, बीसीसीआई को आई गेस शुड टेक केयर, बीसीसीआई शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द एसोसिएशन, स्टे इन टच विद देम एंड मेक श्योर करे कि ड्रेनेज सिस्टम्स एटलीस्ट बेटर हो, ताकि मैचेस जैसे, क्यों, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ स्टेडियम्स इन इंडिया एंड देर आर लॉट ऑफ फैंस एज वेल। तो लगभग मुझे लगता है 2-3 साल बाद एक स्टेडियम में मैच होता है, तो फैंस डिजर्व टू विटनेस द एक्शन लाइव, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, नॉट ओनली आईपीएल but international cricket matches. So I think the fans deserve to watch a full game, and at least जब मैच के दिन रेन नहीं होता है तो at least things should improve. I think going forward BCCI should take care of it. डेफिनेटली। और गुवाहाटी में भी जब मैच हमने देखा था तो वहां पर भी सेम प्रॉब्लम्स थी। एक रात पहले वहां पर बारिश हुई थी, सेम डे एक्शन पर बारिश नहीं हुई थी, बट स्टिल वहां का एसोसिएशन, वहां के ग्राउंड्समैन उतनी क्लैरिटी नहीं ले पाए थे, और ड्रेनेज वहां का प्रॉपरली वर्क नहीं किया, या प्रॉपर वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे वो हेल्प कर सके। इवन आई रिमेंबर एक मैच में इंडिया में दे यूज्ड प्रेस एंड हेयर, वो जो होते हैं हेयर ड्रायर्स, दे यूज दैट टू ड्राई द पिच। सो आई न्यू दोस विजुअल्स, हम सबने एज अ फैन देखा है। वेल, ठीक है, आई होप बीसीसीआई इस चीज पर काम करे, बिकॉज एज द बिगेस्ट नेशन हु वॉचेस क्रिकेट वी डिजर्व टू सी फुल मैच। एटलीस्ट जिस दिन बारिश नहीं हुई उस दिन तो हमें प्रॉपर मैच देखने को मिले। आई होप इसको बीसीसीआई जरूर ध्यान दे। बट लेट्स टेक अ लुक एट द माइलस्टोन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लैश, बिकॉज माइलस्टोन्स जो अप्रोचिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सभी प्लेयर्स अपने अपने माइलस्टोन्स अचीव करेंगे, लेकिन क्या, वो आपको हम अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में स्क्रीन पर। लेट्स टेक अ लुक एट द माइलस्टोन्स नाउ। Okay, Shardul Thakur requires one scalp to get to the milestone of 100 wickets across formats, and David Miller is 1/6 away from completing 100 maximums in one-day internationals. That's quite approachable. Wayne Parnell requires 3 scalps to get to 100 wickets in one-day internationals, and Janiman Malan requires 57 runs to reach the landmark of 1,000 runs in ODIs. वहीं Kagiso Rabada needs 4 wickets to get to 450 wickets across format. तो ये थे milestones। अब इसके बाद में एक बार नजर डालेंगे players to watch out ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लैश, जहां पर हम इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों टीम्स की बात करेंगे। सो आज के लिए साउथ अफ्रीका के एंड से द कैप्टन डेविड मिलर विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। मैचेस 148 रन, 3649 और एवरेज 41.94 का हाईएस्ट स्कोर इनका रहा है ओडीआई का 139 से। डेफिनेटली इज अ प्लेयर टू वॉच आउट। T20 सीरीज में भी हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका को जीत दिलाई है कई मौकों पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुए हैं। अब एक बार नजर डालेंगे इंडिया की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट। देखना होगा कि किस खिलाड़ी को मौका मिला है अब की बार। ओके, सो दिस इज कुलदीप यादव। 71 मैचेस, विकेट लिए हैं 114 और एवरेज है 28.90 का, इकोनॉमी 5.20। डेफिनेटली कुलदीप और डेविड मिलर बनते हैं हमारे आज के प्लेयर टू वॉच आउट। प्रत्यय, आई आस्क यू कि अदर देन कुलदीप, अदर देन डेविड मिलर, व्हिच प्लेयर डू यू थिंक इज बेसिकली द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर दिस मैच? I think specifically for David Miller, I would say that now that he is also leading
The fact that he has also got a chance to lead himself, and even if you look at the way he has been performing right throughout this year with the Gujarat Titans first of all, and then the kind of knocks that he has played. So I think this is a great chance for him as well to show his captaincy credentials, because he hasn't led at any level before this. So I think that is a great opportunity for him. And I think Kuldeep Yadav again, I think he used to be one of those players who you considered. I mean, 2017-18, that was one time when you were considering him to be your first choice player. But then later on, certain players turned up. His bowling form declined. Then we saw a slump in his form in the IPL as well. And after a very emotional, bumpy sort of a ride, he has shown that he has got the guts, he has got the caliber to come back. So we know that he is a strong guy who will say that even if he goes out, he knows how to handle setbacks, how to just get out of that zone where he is not being able to perform, and he has done those sort of things. Of course, he's not entirely into the scheme of things if you talk about all the formats, so he's no longer any of your all format players. But if you look at what kind of ability he has and the kind of things that he can do with the ball, there are not too many options that India has in that particular variety of bowlers. So one thing that Kuldeep Yadav will always give you is that he brings in that rare element of Chinaman bowling, which I think is a great asset to have. And even in whatever chances that he has gotten in the recent past, he has shown, he has performed, I think. So I think from that perspective, these opportunities will be important for him as well, because we know that this is a second string side of sorts. And Kuldeep Yadav not being a first choice player, these are the chances that these players will have to utilize at any cost, because once the first choice players return, then it's very hard, unless an injury happens or unless something of that sort happens. It's very difficult for them to kind of find a place for them in the side. So whatever games these these players are getting, it's important for them to capitalize upon them. And I think apart from that, Wayne Parnell from South Africa, I think with Pretorius ruled out, I think he is one of the players that you will want to, because he can be one of the replacements. He can be into the scheme of things. He is one of those players who can actually bring in the similar kind of elements that Pretorius gives. So he could be one of the players for sure. From India as well, I think the kind of performances we have seen, even from Shreyas Iyer, his ODI form has been brilliant. Ishan Kishan up the order, Mohammad Siraj, the way he has been bowling off late. So I think plenty of players to watch out for. And more importantly, as I said, for Kuldeep, because he has been in and out of the team, not been very consistent. So it will be good for him if he can actually capitalize upon these opportunities. डेफिनेटली। और इसी के साथ आप सभी को अपडेट दे देते हैं, मैच शुरू हो चुका है, बट हम आपको प्लेइंग 11 दिखा लेते हैं कि इस मुकाबले में प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है इंडिया और साउथ अफ्रीका की, सिंस कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चेंजेस हैं और हमें जानना है कि किस तरीके से टीम यहाँ पर किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरी है। आइए एक बार देख लेते हैं प्लेइंग 11 इंडिया की। शिखर धवन, शुभमन गिल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, शरदुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आवेश खान। और वहीं साउथ अफ्रीका की टीम है जहां बहुत सारे बदलाव हुए हैं। एक बार उस प्लेइंग 11 को देख लेंगे कि किस तरीके से आई है। क्विंटन डिकॉक, जानेमन मलान, रीजा हेंड्रिक्स, एरन मार्करम, हेनरिक क्लासीन, डेविड मिलर, मार्को येंसन, एंडिले फिलिक्वाओ और बचोंग फॉर्चून, सॉरी अगर इनका नाम प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत निकला हो तो, लुंगी एनगीडी और एंड्रिक नोकिया। सो ये कुछ है प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका और इंडिया के इस मुकाबले में। एक सोशल ट्रैकर है, वो आप सबको दिखाएंगे, फिर हम सब चलेंगे मैच की ओर। सो जो सोशल ट्रैकर है वो है ये सनराइजर्स हैदराबाद का 35 बॉल 52 फ्रॉम स्काई एंड कलेक्टिव एफर्ट from the bowlers guided the men in blue to a 13-run win over Western Australia in a practice game. Definitely ये एक practice game था जो कि इंडिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। हमने कल ही देखा था और काफी अच्छा मुकाबला रहा था, सिंस सूर्य कुमार यादव की 50 देखने को मिली, रोहित और ऋषभ की ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिली, दिनेश कार्तिक हमें कीपर की ड्यूटी करते हुए वहां पर दिखे। इवन हम लोग आदित्य, इफ यू रिमेंबर, हम लोग ट्विटर स्पेस पे डिस्कस भी कर रहे थे अबाउट दिस कि किस तरह का रहा था ये मुकाबला। अपने सभी फैंस को, अपने सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगी कि ट्विटर स्पेस पर क्रिक ट्रैकर एक डिस्कशन लेकर लगभग रोज आप सभी के सामने अवेलेबल होते हैं हम लोग, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द मैच। बहुत सारे डिस्कशंस वहां पर होते हैं, वहां आपको आदित्य मिलेंगे, वहां पर आपको कौस्तभ मिलते हैं, विघ्नेश मिलते हैं, प्रत्यय भी हमें बहुत सून वहां पर ज्वाइन करेंगे। सो वहां पर हम सब डिस्कशन के लिए मिलते हैं एज फैंस मैच के बारे में, और इसके अलावा जो भी क्रिकेट वर्ल्ड में चल रहा होता है, यू कैन जॉइन अस देयर। इसके अलावा आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, विच इज फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। इसके अलावा टेलीग्राम, नॉट टू मेंशन दैट, उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू आप आर्टिकल्स के थ्रू बहुत सारी अपडेट्स ले सकते हैं। आप चलते हैं, मैच शुरू हो चुका है, इसके बाद मिलेंगे पोस्ट मैच में, वापस से डिस्कस करेंगे मैच के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए क्रिक ट्रैकर के साथ।